So let's start. जैसा मैंने तुमको बोला था in the orientation session that just a second. Hold on. Okay. So just like I think I told you that I'll tell about the math section more in the lecture. So I'll start with introduction to SAT maths. This is my whiteboard, so you don't have to do anything and you don't have to refer any material. You can keep SAT book with you if you want, but all the questions that we solve from the book, ये सब screen पे आएगा. So basically, book is something that you can refer, when you are at home for doing homework questions, for doing some extra questions that are there in book. But all concepts and questions would come on this big screen where you see my face. On that screen it would come and it would be legible. So I'll do all screen switching between whiteboard, मेरे working के लिए, between questions, so you don't have to worry about that. ठीक है, तो जैसे for example ये देखो मैं बताता हूँ. So now I should be centrally visible on your screen, right? Yes. आपको दिख रहा हूँ. तो ऐसे ही board आ जाएगा, question आ जाएगा. You don't have to worry. What you should do in all these classes is you should keep pen, pencil, and a copy, because there'll be a lot of working that you will do, and we will work possibly parallelly, and together. So it is important that you have a copy where you can do all your working. You have your working space and you do all your calculations and mark your answer. So answer hum log, because you are the only student, once you have solved, you can announce your answer and then we can discuss. So this is one advantage that you will have in this program, where we will discuss all your issues and questions. तो वो हम लोग discuss करेंगे. अब coming down to the orientation part, so this is your session 1. So each session means chapter. So in your book, session 1 means chapter 1. So इस तरह से there are 15 sessions. Each session will do one particular will cater to one particular chapter. Okay. Now we are coming down to SAT maths. Let me tell you what is this SAT maths. Like you understood, there are 2 sections on SAT paper on maths section. On maths, section 1 is section 3. I mean, the first section is section 3, which is no calculator section, and the second one is section 4, which is with calculator or calculator permitted section. तो पहले वाले सेक्शन के लिए विदाउट कैलकुलेटर के लिए आपको 25 मिनट्स मिलते हैं, और सेक्शन 4 के लिए आपको 38 मिनट्स 55 मिनट्स मिलते हैं. 38 क्वेश्चंस होते हैं. ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट, ये तो मैंने आपको बता दिया, you know about this. 25 minutes, 55 minutes, 20 questions and 38 questions. So all in all, if you look at, there are 58 questions on SAT paper with no negative marking. You are scored out of 200 to 800 points on maths. 800 is a full score on maths. 800 में से 800. Total 1600 points का SAT paper होता है. 800 goes for English and balance 800 is for mathematics. ठीक है? Questions are of 2 types. If you recall from the orientation session, I told you in mathematics, there are 2 types of questions. Multiple choice question. So you have 4 options, and उन 4 options में से एक ही option right होगा. Multiple options right नहीं होंगे. And then there is something called as grid-in, or you can say short answer type, where there are no options given. आपको उसी को solve करना होगा. उसको solve करके वहाँ answer लिखना होगा. So in the section 3, which is no calculator curve, out of these 20 questions, 15 questions are MCQ. Multiple choice. कितने options होंगे? 4 options. 4 options. And then there are another 5 questions which are, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, grid in. मैं बताऊंगा grid in मतलब क्या होता है. Basically short answer, options नहीं होते. अभी मैं आपको पेपर फॉर्मेट समझा रहा हूँ. सबसे पहले ये जो सेक्शन 4 है, जिसको हम विद कैलकुलेटर बोलते हैं, इसमें 38 क्वेश्चंस हैं. Of these 38, there are 30 questions जो कि MCQ है. बोलो, समझ में आया? Yes.
and balance 8 questions are gridded, short answer वाले. मैं सिर्फ जी लिख रहा हूँ, अभी जी इन कर देता हूँ इसको. So that's how it is done. ये basic structure है आपके mathematics paper. Any questions here? No, sir. तो ये मैंने clear किया. I go back to my presentation. जो gridden question होता है कर्व, this is how it looks like. You get a grid. This is called a grid. This is a grid for you. Where if you see clearly, अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखोगे, so in this grid आपको 0 से लेके 9 तक के symbols दिख रहे हैं for 4 columns. सिर्फ 4 ही columns होते हैं इसमें. Yes. And you get decimal वाला sign. यहाँ पे आपको decimal sign मिल रहा है या वो fraction वाला sign. ठीक है? So you are supposed to do 2 things. You are supposed to enter your answer with a pencil on the top row. ऊपर आप आंसर एंटर करोगे and correspondingly you will darken the oval. तो अगर आंसर आया 2.5 तो आप लेफ्ट हैंड से भी चालू कर सकते हैं. आप ऐसे भी लिख सकते थे 2.5, ऐसे भी लिख सकते थे, या राइट हैंड पे खत्म करके लिख सकते हो जैसे इन्होंने लिखा है 2 and then you go to the corresponding cell and darken it. Decimal, go to the corresponding cell and darken it. 5, go to the corresponding cell and darken it. समझ में आ गया? Yes, sir. This is gridding. तो 201 इस तरह से लिखोगे तो भी ठीक है, इस तरह से लिखोगे तो भी ठीक है. मगर मान लो आंसर आता है 10, तो बीच में नहीं लिख सकते 10. You cannot write 10 here like this. ये गलत हो जाएगा. Either राइट हैंड से चालू करो या लेफ्ट हैंड से, सॉरी, या तो लेफ्ट हैंड से चालू करो या राइट हैंड पे खत्म करो. Okay, sir. Okay, so we'll do more such practice and you will understand them. 2/3 आंसर आया और उन्होंने नहीं बताया कि आंसर फ्रैक्शन में चाहिए या डेसिमल में चाहिए. तो either of ये जो दिख रहा है आपको, ये तीनों फॉर्म करेक्ट है. You can write 2/3, you can write 0.666, you can write 0.667. ये तीनों करेक्ट है. तीनों पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे. Okay, sir. Okay. So with this, let me go ahead. Yes. So what is asked? ये मैंने आपको फॉर्मेट बताया अभी तक. Let's go to the syllabus. They will call it by these names. They have got 4 basic heads. तो वो लोग इसको इस नाम से बोलते हैं. There's something called as art of algebra. ये 33% वेटेज है इसका. 58 का 33, so close to 20 problems. 19 to 20 problems are from this. अब हार्ट ऑफ अलजेब्रा में क्या आएगा? एसएटी में linear equations, interpretations, inequality, system of equations, constructing equations, so solving them. ये सब आएगा हार्ट ऑफ अलजेब्रा में, mostly related to linear equations. Next, problem solving and data analysis, averages, percentages, tables, graph, statistics, mean, median, mode. All this are part of problem solving and data analysis. This is something like around approximately 28%. इसका वेटेज है. जहां तुमको समझ में नहीं है पूछना मुझसे. Though there is nothing like that which you will not follow. The third area is called passport to advanced maths. So this is parabola, functions, line as in line functions, expressions, exponentials, radicals. All this would come under the third head, which is passport to advanced maths. So if you look at passport to advanced maths, would be something like roughly 25%. तो अगर आप देखोगे 28 and 25, 53, 86% weightage first 3 topics का है. Yes. Okay, and the balance 10 to 15% weightage है. There is something called as additional topics in maths. SAT इनको इन 4 एरिया में बोलता है: आर्ट ऑफ अलजेब्रा,
प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा एनालिसिस, पासपोर्ट टू एडवांस मैथ्स एंड एडिशनल टॉपिक्स। उसमें क्या आएगा, सर्कल्स, वॉल्यूम्स, ज्योमेट्री, तुम्हारा कुछ ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे कुछ टॉपिक्स आएंगे और ये 10-15% इनका वेटेज है। So and it is a very transparent, unlike JEE जिसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, they have very clearly defined what they are going to ask and how much they are going to ask. You will not see lot of deviation here. ऐसा नहीं होगा कि additional topic ज्यादा आ गया, वो जितना define किया है उसी range में रहेगा। Okay. So ये सब आपकी बुक में दिया है जो मैं प्रेजेंट आपको कर रहा हूँ। So you don't have to worry कि मुझे लिखना है क्या ये वाला पार्ट। No, you don't have to write. It is there in your book. चलो आगे चलते हैं। So now here we start. So before we start, पहले तो मुझे बताओ कि ये मोड ठीक लग रहा है, तुम are you comfortable? Yes. ठीक है। So now what we will do is on my screen, on the black screen that you see, there will be questions that will appear, and the questions will have reference to your book. For example, it will say exercise 1.1 का question number 5 कर रहे हैं, है ना, वो reference रहेगा। But there could be 2 more types of question जो book में नहीं है। We'll call them challenge problems. वो कैसे आएंगे? वो generally आपको yellow या red color में दिखेगा उसका heading, तो आपको समझ में आ जाएगा that these are challenge or extra problems which are not there in book. Okay? Since you are the only student, we are not doing any typing game. Question would come, so we will do some theory part first, then we will do questions on those theory, then we'll do again some theory part, and then we again solve problems. Okay? तो हम इस तरह से इसको करेंगे। जैसे ही आपको कुछ क्वेश्चन मिलता है, आपको उसका आंसर आ जाता है, you announce, we will discuss. If it is correct, probably we'll not discuss unless and until you tell me कि मेरा फ्लूक था या मुझे इससे अच्छा मेथड चाहिए या और कोई मेथड हो सकता है क्या, you want a discussion, तब तो हम करेंगे। But if you have got it right, we will move on. But if you want me to discuss, we will discuss. Of course, the problems that you don't get right or you are not able to solve, वो तो हम discuss पक्का करेंगे. That suits you? ये सही है method? Yes. ठीक है, Gav. चलो. So on this note, let's start. Tell me if you can see my whiteboard now. अब मेरा whiteboard दिख रहा है क्या centrally? Yes. बड़ा दिख रहा है? Yes. ठीक है, तो चलो चालू करते हैं and we start with very basic mathematical concepts. So define natural numbers for me. What do you mean by natural numbers? The numbers will start from 1 to infinity. So we are talking about all counting numbers because 1 to infinity में 1.5 भी आ गया. Is it a natural number? No. 1.5 is not a natural number. Okay, so all your positive countable numbers are natural numbers. So numbers like 1, 2, 3, 4 and so on. Okay, bolo, any problem here? No, sir. What are whole numbers? Sir, numbers will start from 0 to infinity, which are countable. So basically set of natural numbers plus a number 0. Yes, sir. What are integers? So which contains negative number as well, -1, -2. Yes. So integers are basically set of whole numbers plus minus infinity से लेके -2, -1, negative numbers as well. Yes. Okay. So these are integers. What are rational numbers? ये बताओ. Numbers which are like not countable in decimals or in fractions. अच्छा, तो is 5 a rational number? Is 5 a rational number? Yes. If 5 is a rational number, तो तुम्हारा definition defeat हो गया. You said numbers which are not countable. Can 5 be counted? Can I count 5 chairs in the room that you are sitting? Yes, I can. Is 5 a rational number? Yes, 5 is a rational number. Rational number का definition सोचो क्या? What is the definition of rational number?
अच्छा चलो, आई गिव यू अनदर क्वेश्चन. व्हाट आर इरैशनल नंबर्स? इसका डेफिनेशन याद है क्या आपको? और याद नहीं है, बट स्टिल यू कैन हेल्प मी. आई डोंट वांट अ बुकिश डेफिनेशन. व्हाट आर इरैशनल नंबर्स? What are irrational numbers? But I know that like square roots are like irrational numbers. Like square root. स्क्वायर रूट्स आर. Irrational. अच्छा ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं तुम्हारे साथ. ये क्या लिखा है मैंने, दिख रहा है क्या आपको? Square root 4. स्क्वायर रूट ऑफ 4. अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 रैशनल है कि इरैशनल है? So irrational. इरैशनल है. ओके, व्हाट इज वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4? 2. 2. व्हाट अबाउट 2? व्हाट इज 2, रैशनल और इरैशनल? Rational. रैशनल. तो फिर स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज नॉट इरैशनल, रादर इट इज रैशनल. तो आपके डेफिनेशन में ना कुछ मिसिंग है. तो मैं चालू करता हूं, मे भी देखो तुम शायद बता पाओ. व्हाट अबाउट 1/3? ये रैशनल है कि इरैशनल है? So it's irrational. टेक अ गेस, बोलो. Irrational. Okay. Have you heard of this thing? P by Q, where Q is not equal to 0. ऐसा कुछ सुना है क्या? A rational number is a number that can be represented in the form P by Q and Q should not be equal to 0. तो अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में है तो वो रैशनल होता है. पढ़ा है क्या ऐसा कभी? Yes, sir. ओके. सो 1/3 अगर आप देखोगे तो ये P by Q फॉर्म में है, where Q which is 3 is not equal to 0, hence this is rational. मगर इससे भी अच्छा एक डेफिनेशन है, because this also has small fallacy here. Let's look at another definition. I'll say a rational number is a number which is, ध्यान से देखना, which is either टर्मिनेटिंग खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, और रेकरिंग रिपीट होता रहता है. ठीक है? मैं बोल रहा हूं रैशनल नंबर वो नंबर है जो या तो टर्मिनेट हो जाता है, आइदर इट फिनिशेस, फॉर एग्जांपल 1/5. 1/5 इज 0.2, बस खत्म हो गया. और इट इज रिकरिंग, 1/3 is 0.33333 go on, है ना? तो रैशनल नंबर वो नंबर है जो या तो खत्म हो जाए, 5 खत्म हो गया, 1/10 0.1 खत्म हो गया. तो रैशनल नंबर वो नंबर है जो या तो टर्मिनेट हो जाए या फिर उसमें कोई पैटर्न हो, रिकर हो. बताइए, ये समझ में आया? Yes. तो ऑल सच नंबर्स विल बी रैशनल. मूविंग ऑन. अगर ये समझ में आ गया तो क्या हम इरैशनल नंबर को डिफाइन कर सकते हैं क्या? Yes. इरैशनल नंबर वो नंबर है विच इज नीदर टर्मिनेटिंग, ना तो वो नंबर खत्म होता है, खत्म ही नहीं होता है वो नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉर इट इज रिकरिंग, और ना ही उसमें कोई पैटर्न है, वो रिकर ही नहीं होता है, देयर इज नो रिकरिंग पैटर्न. फॉर एग्जाम्पल पाई, हमको ये पता है कि अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7. ये इसका अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, रियल वैल्यू नहीं है. 22/7 को अगर आप करोगे ना तो आफ्टर 5 और 6 डिजिट इट विल रीअकर. बट पाई का रियल वैल्यू, इफ यू डू, इट्स ह्यूज नंबर्स आफ्टर डेसिमल एंड दे डोंट रीअकर, कोई पैटर्न है ही नहीं. बोलो, आया समझ में? Yes. तो इरैशनल नंबर वो नंबर है जो ना कभी खत्म होता है ना उसमें कोई पैटर्न होता है. याद रहेगा आपको? Yes. चलो, डिफाइन पाई फॉर मी. ये पाई का क्या डेफिनेशन है? व्हाट इज दिस पाई? व्हाट डज इट मीन? So it is used for finding areas in circle. ओके,
But how would you define pi? I'm not asking usage. Okay, I'll give you a hint. It is a ratio. Pi is a ratio. Ratio of what? Ratio between what? Ratio of circumference of circle to diameter of circle. किसी सर्कल के circumference का ratio with its diameter is called as pi. ये सर्कल का circumference है, इसका रेशो टू सर्कल के डायमीटर का रेशो. बोलो, ठीक है? Yes. ये पाई का डेफिनेशन है, ये याद होना चाहिए. आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो. चलो आगे बढ़ें. Yes. तो अभी हमें ना वी आर डूइंग अ स्मॉल थियोरी पोर्शन एंड देन वी विल गो टू क्वेश्चंस. चलो नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं. ये तो हम थोड़ा सा रुक गए थे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए. नेक्स्ट, हाउ वुड यू डिफाइन इवन नंबर्स? व्हाट आर इवन नंबर्स? ये डिफाइन करो मेरे लिए. So numbers which are divisible by 2. नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2. सो वो नंबर 2 का मल्टीपल होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा, तो वो इवन है. करेक्ट? हाउ वुड यू डिफाइन एन ऑड नंबर? So the numbers which are not divisible by 2. वो नंबर जो इवन नहीं है वो सब ऑड है. Yes. बस सिंपल है. तो मुझे बताओ, व्हेन आई ऐड टू इवन नंबर्स गर्ल, व्हेन आई ऐड टू नंबर इवन नंबर्स, व्हाट डू आई गेट? Even number. I will always get an even number. है कि नहीं? Yes. When I add two odd numbers, what do I get? An even number. Always an even number. When I add odd and even number, what do I get? An odd number. Always an odd number. है ना? अच्छा, इसी तरह से if I multiply two even numbers, what do I get? Even number. Always an even number. If I multiply two odd numbers, what do I get? Always an odd number. If I multiply in even and odd, what do I get? Always odd number. सोचो, करके देखो मेंटली कुछ. एक ऑड नंबर लो और एक इवन नंबर लो. Even numbers. ऑलवेज इवन नंबर. ठीक है? ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट पे भी मैं दिखाऊंगा कि कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एसएटी. अभी करेंगे हम, बट ये सब समझ में आता जा रहा है. ये क्लियर है? दिस इज विजिबल टू यू एज वेल, राइट? Yes. ठीक है. अब और क्या ले सकते हैं? लेट मी टेक, व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर? फैक्टर ऑफ अ नंबर का क्या मतलब है? चलो ये बताओ. So the number which cuts, divides it, and the remainder remains 0. Okay, so factor is of a number means a number that can divide the given number and give you remainder 0. Okay, what do you mean by multiple of a number? Multiple. Like if you multiply a certain number, you will get the value. So multiple of a number means that that number when divided by that other number will give you remainder 0. Given number, so a number is called a multiple of another number when this given number is divided by that another number and you get remainder 0. तो उसका multiple होगा. So 3 could be a factor for 15 and 15 could be a multiple for multiple for 5. Yes. चलो, तो ये हो गया फैक्टर और मल्टीपल. एक डिवीजन एल्गोरिथम है जो अगर आपको याद रहेगा तो थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा. एंड आपने पहले किया होगा ये डिवीजन एल्गोरिथम. डिविडेंड इज इक्वल टू, अगर याद आए तो बताना मुझे, मैं लिख रहा हूं. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू, याद आ रहा है कुछ? क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ये याद है क्या आपको? Yes, sir. तो ये कभी कभी काम आ जाता है एसएटी क्वेश्चन में, कभी कभी एसएटी पेपर में इस पे कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये याद रखना है. बोलो, ठीक है? Yes. यहाँ जो भी आपको नोट करना है आप नोट कर लो आपकी कॉपी में. Yes.
तो अभी तक हमने जितना भी किया है, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। we have done नंबर सिस्टम्स को हमने बेसिकली देखा, रैशनल इरैशनल देखा क्या होता है, फिर हमने इवन ऑड देखा, फैक्टर मल्टीपल देखा, और ये एक डिवीजन एल्गोरिथम देखा। एनी क्वेश्चंस टिल दिस पॉइंट? No, sir. So now what we will do, Garv, we will do some problems which are based on these concepts, which has either appeared in SAT paper, sample paper, or they have been part of some good references. Khan Academy, जो कि बहुत अच्छा रेफरेंस है SAT के लिए, अब हम उसके कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं. So you are all ready? Can we do that? Yes. तो दो तरीके हैं. अगर तुमको लगता है कि तुम अपने बुक में रेफर करना चाहते हो, रीडिंग इज इजी फॉर यू, तब तुम अपने बुक में निकाल के बुक पे पढ़ सकते हो. मैं क्वेश्चन बता दूंगा कौन से नंबर का है. और तुमको लगता है नहीं स्क्रीन पे मुझे अच्छा दिख रहा है, तो तुम स्क्रीन पे पढ़ना. अभी बहुत बड़े बड़े अक्षरों में आपके स्क्रीन पे आ जाएगा वो. Okay. तो लेट मी शेयर विथ यू फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे. मैं शेयर कर रहा हूँ तुम्हारे साथ. हियर आई गो. दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम. अब इसको समझने की कोशिश करो. दिस कम्स फ्रॉम योर क्लास वर्क एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 है बुक का. ठीक है? क्या ये कंफर्टेबल है या बुक को देखना है? Sir, this is comfortable. ओके, तब फिर इसी पे करते हैं. चलो लेट्स डू दिस. आई गिव यू फुल 1 मिनट. इसको सॉल्व करने की कोशिश करो एंड देन अनाउंस योर आंसर. Yes. Sir, 2 and option D. ए बी सी डी में से बोलो. विच वन? D. बी फॉर बॉम्बे. D for dog. ओके, डी. डी फॉर दिल्ली. अच्छा ठीक है. लेट्स सी. लेट मी टेल यू योर आंसर इज करेक्ट. आपका आंसर सही है. तो डू यू वांट अ डिस्कशन ऑन दिस कि ये समझ में आ गया? ठीक है. तो अब देन इफ इन दैट केस वी विल बी एबल टू गेन सम स्पीड. इफ यू डोंट वांट अ डिस्कशन ऑन दिस आई विल गो टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. बट आप देखोगे ये सिंपल इवन ऑड के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन, है ना? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑन योर स्क्रीन. Then X must be. So D. Again D. Yes. Absolutely correct. If x plus 3 by 2 is an integer, तो मतलब इसका जो भी वैल्यू है x plus 3 by 2, ये जो भी वैल्यू अगर ये इंटीजर है तो वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए. Yes. राइट, वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए. अगर उसको 2 का मल्टीपल होना है, so 3 is an odd number. 2 का मल्टीपल will be an even number. So unless and until x is also odd, you will not get an even number. Yes. है ना? So answer is x is an odd integer. Can we go to next problem? Yes. Good. Let's do this one. And इसके लिए I give you full 1 minute. तुम कॉपी में लिख सकते हो, जो करना है कर सकते हो, and then we will solve it together. Sir, what? Sorry? Sir, E. Option A. Okay. How? Sir, you only 3 into 5 is 15. That's the only. When 15 is divided by a positive integer, remainder is 3 for how many different values of k? Sorry, divided by positive integer k, remainder, what is, how many values of, different values of k is this true? बताओ. तुमने क्या बोला? A, right? Yes. You are defending this option. Tell me how.
What is that value of k? बताओ. 5. Huh? 5. 5. Yes. When 15 is divided by 5, remainder is 3. Yes. What? Remainder is 3. Oh, sorry, my bad. Remainder 3 है कि क्वेश्चन 3 है? क्वेश्चन है ना 3. Yes, sir. हाँ, चलो रीडू वापस करो. Sir, 3. Option C. Option C. Give me different values of k. Sir, 2, 6 and 4. Absolutely right. अब तुमने सही पढ़ा. 2, 6, sorry, 2, 4 6. and 6. है ना? Yes. अच्छा, अब देखो मतलब कैसे हम लोग गलती कर सकते हैं. If you put k equal to 2, divide 15 by 2, what is remainder? 15 by 2 को डिवाइड करो ना. Yes. चलो I'll do a very conventional method जो कि नहीं करना चाहिए इस लेवल पे. 2 7 जा 14. ये देखो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे. What will be the remainder? 1 चाहिए क्या रिमाइंडर? रिमाइंडर 3 आना चाहिए. तो फिर ये गड़बड़ कैसे किया आपने? आपने ना आंसर तो सही निकाल दिया बट k की वैल्यू गड़बड़ दे दी. ओके, पुट k equal to 12. What will be remainder when 15 is divided by 12? 3. 3. So what are 3 different values of k? 4, 6 and 12. बोलो, समझ में आया? Yes, sir. तो आंसर इज ऑप्शन सी 3. मगर अब वो तुम्हारा इट वाज लक. अगर उन्होंने k का वैल्यू पूछा होता तो तुम 2, 4, 6 कर देते, जबकि वो है 4, 6, 12. ठीक है गर्व, समझ में आ रहा है? Yes, sir. So this is the beauty of SAT. They are not checking your कि वो कॉन्सेप्ट में आप कितने इंटेलिजेंट हो. आर यू अवेयर अबाउट द डेटा गिवन एंड हाउ आर यू हैंडलिंग. जैसे इस क्वेश्चन में तुमने पहले उसको क्वेश्चन पढ़ लिया और उन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें फंस गए तुम. फिर तुमने बाय डिफॉल्ट राइट आंसर निकाल दिया बट वो वैल्यू ऑफ के पूछा नहीं था. अगर पूछा होता तो हमारा गलत हो जाता. समझ गए? अब मैं आगे चलता हूँ. सो दैट्स हाउ इट इज. सो द पॉइंट इज दिस इज द लर्निंग. ये ट्रेनिंग है. दिस इज व्हाट यू शुड लर्न. चलो लेट्स सॉल्व अनदर प्रॉब्लम. एक और करते हैं. एक्सीलेंट प्रॉब्लम. ये ग्रिडिंग क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में आपको आंसर लिखना है, ऑप्शंस नहीं है. तो आप सॉल्व कीजिए. आई गिव यू 2 full minutes. ब्यूटीफुल प्रॉब्लम. नहीं आएगा तो मुझे बताना, मगर ये बिना लिखे सॉल्व नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है. तुम्हारे वहां पे ना वो एक कीबोर्ड पड़ा हुआ है उस तरफ. तुम Yes. आंसर चैट में टाइप करना और मुझे भेजना. आई वॉन्ट यू टू टाइप द आंसर एंड सेंड, नॉट अनाउंस.
What happened? नहीं हो रहा है? Shall I? हाँ? Yes. तो क्वेश्चन पढ़ लो. Read it loudly for me. If n and p are integers greater than 1, and if p is a factor of both n plus 3 and n plus 10, what is the value of p? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है. अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं. मैं इसको वॉक करता हूँ, तुम समझने की कोशिश करना. So what all is given to me? What is that I know? I know that n, comma p both are greater than 1. This is given, Garv. And I also know that n plus 3 and n plus 10 both are factor of p, multiple of p. p इन दोनों का फैक्टर है. इसका मतलब जब p n plus 3 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, और p n plus 10 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा. ठीक है. अभी 1 मिनट के लिए इसको होल्ड करते हैं. लेट्स होल्ड दिस. एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे जाते हैं. द कॉन्सेप्ट सेज, या कॉन्सेप्ट समझाने से पहले, यू मे नो दैट ऑलरेडी. जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से 35 को लेते हैं. 35, कैन आई से 5 इज अ फैक्टर ऑफ 35? कैन आई से दैट? Yes. Okay. Similarly, can I say 65 is also 5 is also factor of 65? Yes. Okay. So if I can say that, then mathematics says that if a given number is factor of two numbers, then इन दो numbers का जो difference होगा ना, इनका जो difference होगा, वो given number उसका भी factor होगा. तो ये true है क्या? Yes. 65 और 35 का जो डिफरेंस है, क्या 5 उसका भी फैक्टर होगा? हमेशा होगा. बिकॉज ये एक मैथमेटिकल रूल है दैट इफ लेट्स से n is factor of a and n is factor of b, then mathematics says n will always be factor of a minus b. Of course, let's say is greater than b. Yes. मैं यही रूल यहां लगाता हूं. अगर p इसका फैक्टर है और p इसका भी फैक्टर है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? इन दोनों का डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दीस टू नंबर्स n plus 10 minus n plus 3? p is the factor of that number. हाँ, but what is difference of these two numbers? n plus 10 minus n plus 3. What is this? Equal to 7. So p is also factor of p. किसका फैक्टर हो जाएगा? 7 का. What is so special about 7? 7 is a prime number. 7 is a prime number. तो p का दो पॉसिबल वैल्यू बताओ. अगर p को 7 प्राइम नंबर का फैक्टर होना है, तो p की दो ही पॉसिबल वैल्यू है. कौन सी? 1 and 7. क्योंकि प्राइम नंबर तो वो नंबर होता है ना जिसका फैक्टर वो खुद है या नंबर 1 है. बट कैन p be 1? Look here, can p be 1? No, sir. No. So the only possible value for p is 7. 7. Answer is 7. अब इसमें क्या समझ में नहीं आया, पूछो मुझसे. So, like, if I add, like, what would be the value of n? What could be the value of n? Yes. अगर आप इसको समझोगे तब तो n can take any value, because after every 7 number, देखो +3 से +10 किया, +3 से +10 किया, तो आप हर 7वां नंबर, every 7 number p will divide. So I'll give you an example. ये मैं एक एग्जांपल आपको देने की कोशिश करता हूं. So let's say कोई एक नंबर लेते हैं जो इसका फैक्टर है. So let's say n is 39. ओके, n को 39 लेते हैं. अब बताओ n plus 3 क्या होगा? 42. 42. क्या ये 7 का फैक्टर है? Yes. मल्टीपल है. n plus 10 क्या होगा? 49. At the same time,
n को आप 53 भी ले सकते हैं. What is 53 plus 3? 56. Is it a multiple of 7? Yes. 7 8 जा. 53 plus 10. तो n तो कुछ भी वैल्यू हो सकता है. It can take lot of values. नहीं कुछ भी नहीं, but it can take many values. बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है n की, तो जिसके लिए ये कंडीशन ट्रू है. बोलो. Yes, sir, understood. n 95 भी हो सकता है, उसके लिए भी ट्रू होगा, क्योंकि 98 भी फैक्टर है, 7 मल्टीपल है 7 का, और 105 भी मल्टीपल है 7 का. इसीलिए उन्होंने आपसे n नहीं पूछा, बिकॉज इट कैन टेक मल्टीपल वैल्यूज, बट t विल बी 7. सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. जैसा मैंने आपको बोला था, तो ग्रिडिन में आपको 7 लिखना है, या तो राइट हैंड पे या लेफ्ट हैंड पे, और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सर्कल को डार्कन करना है. समझ में आ गया? चलो, सो वी गो टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. एक मिनट रुको. चलिए, लेट्स सॉल्व 1 मिनट टाइम. दिस इज बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन है. क्वेश्चन पढ़ लिया आपने? Yes. हम साथ में करते हैं. लेट दिस सिंबल, हम इसको क्यूब बोल देते हैं. इस सिंबल को, ये जो सिंबल है ना, गर्व, इट रिजेंबल्स अ क्यूब. मैं इसको क्यूब बोलता हूँ. represents number of different pairs of positive integer whose product is x. For example, अगर ये नंबर के आगे लग गया 16, so if this cube is there, तो किसी ने डिफाइन कर दिया this number, इसको क्यूब बोला, 16 is equal to 3. तो basically it means there are 3 pairs. कौन कौन से? 16 into 1, 8 into 2 and 4 into 4. बस ऐसे ही 3 पेयर होंगे इंटीजर्स के जिनका प्रोडक्ट 16 है. तो वैल्यू ऑफ क्यूब 16 is 3. समझ में आ गया? ऐसा किसी ने डिफाइन किया. सो दे आर आस्किंग, अगर यही लॉजिक लगाएं तो क्यूब 36 का क्या आंसर होगा? How many pairs of integers are there जिनका multiplication 36 आएगा? Basically that's what they are asking. Yes. बोलो, बताते जाओ, मुझे पेयर्स बताते जाओ. एक तो गया 1 into 36. Then 18 into 2. Okay. 9 into 4. What about 3 into 12? 12 into 3. Yeah, it is also there. और एक तुमने क्या बोला? 9 into 4. Yes. Okay. And then 12 into 12. Then Huh? 6. ठीक है. Anything else? No, sir. बस, तो आंसर हो गया. There are 5 such pairs. Yes. अब this is a SAT problem और ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं. Beautiful problem, but I'll not give you a lot of time. Easy question है. Take 45 seconds. Please solve. X by 3 is equal to x square है वो, हाँ? X square.
Which of the following? X can be which of the following? Yes. Sir, option D. Which option? D. B for Bombay. Sir, D. D for Delhi. Okay. अब तुम्हारा आंसर राइट है. You have got it right. You let me know if you want to discuss. Otherwise, I'll go ahead. I would like to discuss this one. ठीक है. So let's see. What they are saying is x by 3 is equal to x squared. Then which of the following can be value of x? Can be. मतलब it may take more than one value. तो रख लेते ना. Let x be equal to 1 minus 1 by 3. तो रख के देखते हैं. Put x equal to minus 1 by 3 on your left hand side. What do I get is minus 1 by 9. Yes. Put it on right hand side. X का square minus 1 by 3 का square is 1 by 9. Are they equal? No, they are not equal. So option A cannot. ये तो आंसर नहीं हो सकता. बोलो आया समझ में? Yes, sir. So जिसमें भी 1 आ रहा है वो तो आंसर नहीं होगा. Option A cannot be answer. Let's go to second Roman. Put x equal to 0. 0 by 3 is 0 and 0 का square is 0. Yes, x can be 0. बोलो. Yes. आंसर C भी नहीं हो सकता. 3 only तो नहीं है. Go to the third one. 1 by 3 divided by 3 is 1 by 9 and 1 by 3 का square is also 1 by 9. Roman 3. Yes. So this is always true. So answer is option Roman 2 and Roman 3 only. This is how I have solved. What was your method? Sir, if you like, if I take, square root everywhere, so it would be square root of x by 3 by x, which is equal to x. And like if I put the value minus 1 by 3, it is not applicable there. So root of a number minus नहीं आ रहा है. So okay, ठीक है. Because then it's not defined. It will be a complex number. Yes. Okay. So you took second and third. ठीक है. Will do. No problems. That is also okay. Coming down to, now we have questions on expressions. तो इसको करने से पहले, are you carrying a watch with you? Yes, sir. Are you wearing a watch? Yes, sir. What's time by your watch? Sir, it's 7:18 at the moment. ठीक है. तो हमारी क्लास में क्या होता है? There's a 5 minutes break. हम वो ले भी सकते हैं. And if you don't want, then we can continue also. तो बोलो क्या करना है? ब्रेक लेना है? 1 घंटे के बाद मिलता है एक ब्रेक, या अभी कंटिन्यू करें? Let's take a 5-minute break. ठीक है. So I'll stop share. We take, रुको मुझे मेरा वॉच देखने दो. So this is 7:18, rather 7:19 हो गया है अभी. So by my watch 7:24 we meet again. Okay, sir. Okay. Yes, sir. So we'll do one more small concept and then we will move forward. एक और छोटा सा concept करते हैं. Let us see if you recall, you would have done this in your school. We are talking about exponents. तो ये थोड़ा सा SAT favorite concept है. They do ask questions on this. So we are talking about exponents. How would you define exponents? Exponents का क्या मतलब होता है? So if I tell you a to the power b, what does it mean? A is to the power b. The number, it contains the number of a. So exponent basically means number of times you will multiply a by itself, है ना? Yes. A is called as base. ये इसका base हो गया. And this is, like you said, exponent. इसका दूसरा नाम है power, index. ये सब इसके नाम है. So this is exponent. इसके कुछ basic product rules, power rules और ये सब हमको याद होने चाहिए. So for example, if I have x to the power a multiplied by x to the power b,
This is nothing but x to the power a plus b. This is called product of a power. Basically, when bases are same and they are multiplied, then powers are added. Powers add हो जाएंगे. Similarly, ये भी आपको पता होगा. So I am doing a quick revision. X by a divided by x to the power a divided by x to the power b. ये हो जाएगा x to the power a minus b. एक power to power rule होता है. x to the power a to the power b. ये याद है कि आपको क्या होगा ये? X to the power a into power b. So basically, this is x to the power a into b. Yes. A to the power b नहीं होगा, है ना? Yes. This is a into b. This is how you have to do this. If it is x into y to the power a, ये क्या होगा? What will this be? This will be x to the power a into y to the power a. है ना? इसी तरह से इसका एक फिफ्थ वाला है. When x is divided by y to the power a, this can be written as x to the power a upon y to the power a. और कौन सा एक नेगेटिव पावर का रूल है. नेगेटिव पावर का रूल क्या है? x to the power minus a can be written as 1 upon x to the power a. इसका रेसिप्रोकल. Yes. Okay. And what is x to the power 0? 1. x to the power, ये 0 exponent है. This is 1. Okay? Yes. अच्छा चलो एक और ट्रिकी पार्ट पूछता हूं तुमसे. What is 0 to the power 0? 0. So दो आंसर हो सकते हैं, 0 और 1. Because we just said अगर x का वैल्यू यहाँ पे 0 हुआ तो हमने तो 1 बोला इसको. 0 to the anything to the power 0 is 1. So basically, you know, मैथमेटिकल साइंटिस्ट, अगर ऐसा कोई साइंटिस्ट होता है जिसको मैथमेटिकल साइंटिस्ट बोले, तो ये इसमें ना there is no clear division. Some literature will say 0 to the power 0 is 0 because there was nothing. Raised to nothing means 0. And some would say anything raised to 0, anything raised to 0 is 1. So basically this is, अभी के लिए you can say this is not decided or indeterminable. Cannot be determined. CND लिख देता हूँ. Cannot be determined. ठीक है? या indeterminate. Yes. So these are some exponent power rules which can come handy to you when you're solving some problems. अभी हम कुछ problems पे जाएंगे and slowly we will come to exponents also. मैं वापस जाता हूँ मेरी screen पे and we solve some more problems. And my PPT expressions. Let's take first question. 30 seconds. Simple problem, 30 seconds. Now this is real SAT. Yes, Gav. What is the value of 1 by a? अरे ये इतना टफ है? Shall I do this? Three a plus 2 divided by a equal to 11. ये पूरा equal to 11. What is the value of this? बोलो गर्ज कुमार.
मैं करूं इसको, shall I do this? Okay, so I'll take a on the other side. So can I write 3a plus 2 is equal to 11a? इसको ऐसे लिख सकते हैं कर्व. Yes, sir. 3a को इस साइड लेके आ जाओ. So what I get now is 2 is equal to 8a, ऐसा लिख सकते हैं. Yes, sir. और a is equal to, a का क्या वैल्यू आ रहा है? 2/8, which is 1/4. But are they asking value of a? No. They are asking 1/a. तो आंसर क्या होगा? 4. आंसर will be 4, ऑप्शन बी. बस ये हो गया सॉल्व. इसमें क्या डिफिकल्ट था? बताइए, what was so difficult here? क्यों नहीं हुआ ये? सिंपल था ना ये? Yes. हाँ. चलो, we go to next problem now. Let's look at this. ये येलो प्रॉब्लम है, ये आपकी बुक में नहीं है. ये येलो प्रॉब्लम दिख रहा है, लिखा हुआ येलो से. Yes, sir. These problems are extra problems that you get when you are there in class. इसको सॉल्व करो. I give you full 1 minute. इसको हम बोलते हैं चैलेंज प्रॉब्लम. 62 to the power of 6 to the power 1/2. 6 to the power 1/2 plus 6 to the power 3/2. Okay, sir. 6 to the power 1/2 plus 6 to the power 3/2. Which of the following value is equal to value above? This is based on the concept we just did. Sir, option D, 36. Okay, तो तुम मेरी गूगली में फंस गए. चलो बताओ कैसे. आओ. अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, व्हाइट बोर्ड पे जाते हैं. यू विल डिक्टेट मी दी स्टेप्स एंड आई विल डू लाइक यू से. सो वी हैड, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कर्व. वी हैड 6 to the power 1/2 plus 6 to the power 3/2. You are saying answer is 36. चलो लेट्स सी हाउ. बोलो मुझे क्या करना है. What will be my first step? Sir, by adding the powers. Sorry? Sir, by adding the powers. By adding the powers. But that is not what exponent rule says. जब बेस मल्टीप्लाई होंगे तब पावर्स ऐड होंगे. Yes, sir. यहाँ तो बेस मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, तो ऐड आप पावर कैसे करोगे? है ना. तो एक काम कर सकते हैं, देखो 6 1/2. कैन आई से दिस इज नथिंग बट √6? बोलिए. Yes, sir. है ना. और 6 3/2. कैन आई से दिस इज √6 क्यूब? Yes. अगर ये 6 क्यूब है तो इसमें से एक 6 स्क्वायर बाहर बन के 6 √6 हो सकता है. Yes, sir. ओके. और ये √6 है. कैन आई टेक √6 कॉमन? तो अंदर क्या बचा? 1 + 6. बोलो. Yes. तो आंसर क्या हुआ? Sir. ये आंसर है आपका 7 √6. वन बाई टू को मैंने √6 लिखा, ये 3/2 है तो √6 क्यूब लिखा. ये 6 क्यूब इज नथिंग बट 6 स्क्वायर इंटू 6, उसका रूट. 6 स्क्वायर में से एक 6 बाहर आ जाएगा, एक √6 बच जाएगा. Yes. है ना. तो आंसर इज 7 √6. कौन सा ऑप्शन है देखना पड़ेगा. कौन सा ऑप्शन है? बी. अब आप ये सॉल्यूशन देखो और मुझे बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या. ये ऐसा आता है एसएटी में, इतना सिंपल सा एक्सपोनेंट का क्वेश्चन था. तो आप चाहो तो इसका सॉल्यूशन लिखो. वी विल डू मोर सच प्रॉब्लम फॉर योर प्रैक्टिस, डोंट वरी. दिस इज अ चैलेंज प्रॉब्लम. लेट मी नो व्हेन डन. Yes.
Done, sir. Okay, so we go to back and solve some more problems. Another challenge problem. Let's see this. What value of y satisfies the above equation? 4 to the power 1 by 5 into 3 to the power 2 by 5 is equal to y to the power 1 by 5. ये ग्रिडन है तो आपको आंसर टाइप करना है चैट बॉक्स में और मुझे भेजना है. आपके पास वहां पे कीबोर्ड है, उसमें आप आंसर टाइप करोगे चैट बॉक्स में तो मुझे यहाँ दिखेगा. What happened, Bharat? मैं करूं? Shall we do this together? हाँ? Yes, sir. Let's Okay. तो मैंने स्टॉप शेयर किया. तुम ये फिगर याद रखना. And I go to my whiteboard so that it is visible. Let's have a new sheet. Let's do it. Yeah. बताओ क्वेश्चन क्या था? 4 to the power 1 by 5 into 3 to the power 2 by 5, which is equal to y to the power 1 by 5. So they want value of y, right? अब बहुत ध्यान से देखो. ये जो 4 to the power 1 by 5 है और ये जो 3 to the power 2 by 5 है, इनका पावर सेम नहीं है. बट कैन आई राइट इट लाइक दिस? ऐसे लिख सकते हैं क्या? Yes. सो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? Yes. 3 स्क्वायर को मैंने 9 लिख दिया. इसका पावर भी 1 by 5 है, इसका पावर भी 1 by 5 है. 4 into 9 इसको ऐसे लिख सकते हैं हम. 36 to the power 1 by 5. Yes. इसको कंपेयर कर रहे हैं y equal to 1 by 5. Yes. Now if you look at this, अगर ऐसा है where powers are same तो बेसिस को सेम होना ही पड़ेगा. Yes. तो y का क्या वैल्यू होगा? 36. 36. That is your answer. क्योंकि इनका पावर सेम था मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया. Yes. बोलिए आ गया समझ में? Yes, sir. तो ये ऐसे होगा. अब आपको ये नोट करना है, नोट करो. ये 2 चैलेंज प्रॉब्लम थे, थोड़े से इंटरेस्टिंग से प्रॉब्लम थे. एक्सपोनेंट्स के ऊपर जो थ्योरी अभी हमने देखा उसके ऊपर था ये. So problem is like this. There is a probability they may appear on your SAT paper. तो इसका और प्रैक्टिस करना है. We did 2 such problems. Let me know when done.
Done, sir. Okay, so we move back to our PPT black space जिसमें हमको ये questions करने हैं and here we are. ये question दिख रहा है आपको? Yes, sir. और ये कुछ change हो गया मेरे से शायद. Anyway, आपको दिख रहा है तो ठीक है. Let's solve this one. Very simple problem. जितना lengthy दिख रहा है ध्यान से पढ़ो हो जाएगा तुमसे. What is the sum of values of 6 pairs? Sir, option B, 7. Correct, absolutely correct. तो ये थोड़ा सा मैकेनिकल है. There is nothing much to add, but answer is 7. बोलो, you want to discuss this? इसको करना है या आगे बढ़े? Let's move. हाँ? Move on. Let's look at this problem, Garv. A very good problem. I give you 1 minute. This is more of logical reasoning than mathematics. How many students are in the class? Sir, 24. तो गड़बड़ हो गई. Okay, look the way I am solving it. ठीक है? So let's say we arrange them in ascending order of their height. छोटे height से बड़ी height तक जाते हैं because it says everyone in class have a different height. ठीक है? So let's say this is the first student, then there is second student जो उससे बड़ा है. So height बढ़ती जा रही है जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं. Let's say this girl of ours, क्या नाम है इसका? Stacy. Stacy यहाँ पे. This is where Stacy is. How many people have lesser height than Stacy? 12. 12. Are you sure? Read the question. She is 12th tallest. How many people are less than Stacy? 11. 11. तो यहाँ पर 11 लड़कियां होंगी उसके ऊपर जिनकी हाइट कम है. Yes. Similarly, she is 12th shortest. How many people have height more than Stacy? 11. 11. So total number of people 11 plus 11 22 plus Stacy. आंसर क्या है? 32. बोलो समझ में आया? Yes. तो इसीलिए मैंने कहा था दिस इज मोर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग देन मैथमेटिक्स. आगे बढ़ते हैं. लेट्स डू अनदर प्रॉब्लम. लेट्स सॉल्व दिस. टेक 90 सेकेंड्स. वापस जाना है क्या लास्ट वाले पे? ओके.
How many girls are on the bus? My advice to you is कि option से भी जा सकते हो because option is also additional information. Remember that. Yes. Sir, option C. Absolutely correct. Very good. सही बोला. Need a discussion? No, sir. ठीक है. We go to next problem then. Before we go to next problem, let us try and understand linear relationship. So इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. अच्छा, तुम बन गए हो मेरी स्क्रीन पे, मुझे आने दो स्पॉटलाइट पे. हाँ. So Garv, let's discuss this. Tell me what do you mean by linear relationship का क्या मतलब होता है? किसी भी दो वेरिएबल के बीच में अगर मैं इसको let me be more precise. So if I tell you that there is some relationship between two variables, price of fuel and demand of fuel, airfare and number of travelers, ऐसा कुछ भी. These are two variables, let's say. So what is the difference between what do you mean by relationship between two variables then? Linear relationship किसको बोलते हैं? What kind of relationship is linear relationship? They are dependent on each other. Okay, so if they are dependent on each other, then there is a relationship for sure. Yes. But I am saying linear relationship. Linear का क्या मतलब होता है? Linear word. Linear equation का क्या मतलब होता है? What do you mean by linear equation? Linear equation को define करो. Linear equation का क्या मतलब? भूल जाओ relationship. Linear equation सुना होगा ना तुमने? Standard form of linear equation, many solution, no solution, system of linear equation, linear equation in one variable, linear equation in two variable. तो linear equation का क्या मतलब होता है? In your own words, I don't need a bookish definition. And if you know bookish definition, वो बता दो. So an equation to find the value of a variable from that equation. Correct. So there are variables and you have to find value of those variables. But the point is, why would you call them linear equation? Because there's something called as quadratic equation. So what is difference between linear equation and quadratic equation? हाँ, ये आंसर करोगे तो तुमको पता चल जाएगा. What is difference between linear equation and quadratic equation? Basic difference क्या है दोनों में? कैसा दिखता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन का कोई एग्जांपल दे सकते हो क्या? कोई लीनियर इक्वेशन बता सकते हो क्या मुझे? देखो, मैं यहाँ पे करता हूँ स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन. यस. तो गर्व, व्हाट आई एम सेइंग हियर इज, ब्लू ले लेता हूँ, ये ग्रीन है ना. We are trying to understand something called as linear equation, linear function, linear relationship. हम कुछ ये चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं. तो यहाँ पे रिलेशनशिप लिख देते हैं या इक्वेशन लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी. ओके, लेट्स सी दिस. अब अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, एंड ये एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पे. लेट्स से k is a variable which means number of kilometers traveled, and t is a variable which means total fare. आपने उबर बुक किया, उबर ने आपको बोला मैं 10 रुपीज पर किलोमीटर लूंगा, मैं आपसे कोई बुकिंग अमाउंट नहीं लूंगा, आप बैठो, जितना किलोमीटर आप मेरे साथ ट्रैवल करोगे इंटू 10 कर देना, और जो वैल्यू आएगा वो टोटल फेयर होगा. ये एक इक्वेशन बन गया. दो वेरिएबल्स को रिलेट कर दिया हमने, जहां पे ऊबर वाले ने कहा दिस इज नंबर ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल्ड, दिस इज टोटल फेयर. टोटल फेयर. ये समझ में आता है क्या आपको? ओके. नाउ आई एम टेलिंग यू कि इस तरह का जो रिलेशनशिप है ना,
ये लीनियर रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ, किलोमीटर एंड टोटल फेयर। जब किलोमीटर आपने 1 ट्रैवल किया, टोटल फेयर क्या होगा? 2, 20, 3, 30, 34। 40, सिमिलरली ऐसे जाते जाएंगे, 10 किलोमीटर ट्रैवल किया तो टोटल फेयर क्या होगा? 100। अब एक बात बताओ मुझे, एवरी टाइम आई इंक्रीज माई किलोमीटर बाय 1, मेरा टोटल फेयर कितने से बढ़ रहा है? 10 से। So every time I make a fixed change of 1 kilometer, my total fare is also increasing by a fixed amount, which is 10. ये जो इस तरह की रिलेशनशिप होती है ना, इसको लीनियर रिलेशनशिप बोलते हैं, because when I will plot them on a graph paper, let's say this is x-axis kilometer, let's say this is y-axis total fare, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40. कोई ट्रैवल नहीं किया तो 0। तो आप देखोगे दिस इज मोस्टली अ किस तरह की लाइन है ये? स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप है which when plotted on a graph paper it will give you straight line. अब आज के बाद आपको कोई बोलेगा लीनियर रिलेशनशिप या लीनियर इक्वेशन डिफाइन करो, कर पाओगे आप? yes. एक ऐसी रिलेशनशिप, एक ऐसा इक्वेशन जिसको जब आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे तो आपको मिलेगा स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं दे रहा है तो फिर वो रिलेशनशिप लीनियर नहीं है। बोलिए, क्या ये बात समझ में आ गई? Yes. So this is how we will define linear relationship. अब ऐसा हो सकता है ऊबर वाला आपको बोलता है दैट आपने अगर मुझे बुक किया तो मैं आपसे 5 रुपीज तो पहले चार्ज कर लूंगा कितना भी ट्रैवल करूं, ये बुकिंग अमाउंट है, और उसके बाद 10 रुपीज पर किलोमीटर। तो आपका इक्वेशन कैसा बन जाएगा? T इज इक्वल टू 10K प्लस 5। बोलो ऐसा बन जाएगा? Yes. तो जब आप इसको प्लॉट करेंगे ना, आप देखेंगे आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, ग्रीन वाला ये यहां से चालू हो रहा है। जब किलोमीटर 0 है, फेयर कितना है? 5। आपने बुक किया और आपने बोला नहीं मुझे नहीं जाना, कैंसिल करता हूं, यू विल पे 5 रुपीज। तो व्हेन k is 0, t will be 5। बोलो समझ में आ रहा है? Yes. When k is 1, what is t? 5. कितना? When k is 1, Is 15. 15। When k is 1, मैं यहाँ पे ग्रीन में लिख रहा हूँ 15। When k is 0, t is 5। When k is 2, 25। k is 3, 35। बोलो। तो ये बढ़ तो हमेशा 10 से ही रहा है, इट इज इंक्रीजिंग बाय 10। ये है वो इंक्रीज, एंड दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट। टेल मी इफ दिस इज क्लियर टू यू। Yes, sir. एनी डाउट हियर गर्ल? No, sir. ठीक है। सो अब कुछ छोटे से बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, देन वी विल गो अहेड। तो अच्छा, मैं आपको कुछ चीजें इसमें बता देता हूँ पहले। तो ध्यान रखना, इक्वेशन से ग्राफ बना सकते हैं, या अगर आप मुझे ऐसा टेबल देंगे तो भी मैं ग्राफ बना सकता हूँ। k का वैल्यू, t का वैल्यू, k का वैल्यू, t का वैल्यू, एंड आई कैन प्लॉट इट। Yes, sir. So let me go to some questions now to see how much we have understood. This is the first problem for you. अच्छा, तुम लिखना चाहते हो? हाँ, इसमें से कुछ लिखना चाहते हो तो लिख लो तुम्हारे स्क्रीन पे, एंड लेट मी नो व्हेन यू वांट मी टू स्टार्ट।
Done, sir. Okay. First problem for you, Bharat. There are some values of x, there are some values of y. वो बोल रहे हैं ये values को देख के ये चार इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन करेक्ट है, which represent those values. Let me know when you're done. Yes. So option D. Option D. Option D. Did you say D? Yes, sir. अच्छा, कैसे निकाला ये आंसर? हाउ? करेक्ट, आंसर करेक्ट है, बताओ कैसे? By substituting the value of x in the equation. Yes, yes. That is only the way. So if you put x equal to 1 in this, you will not get y3. तो ये आंसर हो ही नहीं सकता. Yes. If you put x equal to 1, you will not get y3. ये आंसर हो ही नहीं सकता. If you put x equal to 1, you get y3, but you have to wait. Put x equal to 2, you don't get 7. Forget it. Put x equal to 1, you get 3. Put x equal to 2, you get 7. Put x equal to 3, you get 11. And anyway, this is the only choice left for you now. So ये आंसर होगा ही होगा. So this is the answer and correct. ये मेथड आपने एकदम सही किया. Very good. चलो आगे चलते हैं. This is more about finding the right equation. Solve कुछ भी नहीं करना है. So you can type the option. My option A, B, C, D. Type करके भेज दो chat box. Okay, sir. A, B, C, D. What do you say? I have to write the options, right? Or I should write the whole equation as well. No. Only the option. A, B, C, D. Only type that. Not the equation. Correct. Very good. कैसे आया ये आंसर? But I just substituted the value to check which of the could be correct. Okay. So I'll give you a method for this now. Always in such problems, you should target first to find the present age. So for example, how old was a person exactly 1 year ago? ठीक है?
if exactly X years ago the person was Y years old, so person was Y years old when X years ago, तो उसका करंट एज हो गया ये X years पहले वो Y years का था, तो Y plus X is his current age. Yes, sir. Now, how old was a person 1 year ago? आज से 1 साल पहले, इसमें माइनस कर दो. This is the answer. So try and go for the present age. अगर आपने present age निकाल लिया, फिर मैं आपसे कुछ भी पूछूं, आगे का पीछे का, you will always be able to calculate it. Yes, sir. ठीक है. Let's go for the next problem. नहीं, next problem पे जाने से पहले I think हम लोग है ना, नहीं जा सकते हैं, जा सकते हैं. This is real SAT problem. I give you 2 minutes. Please solve. ये मेरे ऊबर वाले से अगर तुम ज्वाइन करके देखोगे तो समझ में आ जाना चाहिए. बोलो. Shall we do this together? Question समझ में आया क्या? चलो, read it out loudly for me. To edit a manuscript, Miguel charges $50 for the first 2 hours and then $20 per hour after the first 2 hours. Which of the following expresses the amount in dollar? C. Miguel charges if it takes him X hours to edit a manuscript, where X is less than 2. Less than 2? Sorry, greater than 2. Greater than 2. तो वो बोल रहे हैं कौन सा इक्वेशन होगा उसका. पहले तो आप ये बताइए, have you understood the question? What is happening? There is this guy who is giving professional services, Gar, and he is telling us that I will charge for first 2 hours $50. Yes. And if you take any additional hour above that, I will charge $20 per hour. Yes. Okay, and my total charge is given by alphabet C. तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं जाता हूँ आपके स्पॉटलाइट करता हूँ, ये आप देखो और इसको सॉल्व करते हैं. चलो, लेट्स सॉल्व इट एंड सी क्या ये इतना टफ है या डिफिकल्ट है. तो म्यूगिल का टोटल चार्ज, टोटल फेयर क्या है? सी है. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट एक्स इज ग्रेटर देन 2. आप काम तो 2 घंटे से ज्यादा का ही करा रहे हैं, ये तो दिया हुआ है. अगर आप 2 घंटे से ज्यादा का काम करा रहे हैं तो फॉर फर्स्ट 2 आवर्स कितना चार्ज करेगा, वो फिक्स हो गया. बोलो. 50 $50 नहीं, इंटू कुछ भी नहीं, फर्स्ट 2 आवर्स का $50 लेगा वो. आपने टोटल कितने आवर्स काम किया? More than 2. हाँ, More than 2. हाँ. व्हाट इज दैट वेरिएबल? C. अरे व्हाट इज सी? नहीं 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 नहीं, देन यू हैव नॉट अंडरस्टूड द क्वेश्चन. मैं वापस जाता हूँ, डोंट वरी, इसको फिर से पढ़ते हैं फिर. चलो, रीड इट अगेन. To edit a manuscript, Miguel charges $50 for the first 2 hours and $20 per hour after the first 2 hours. Which of the following expresses the amount in dollar C Miguel charges? जाओ. तो अगर अब सी को डिफाइन करें जो कि एक वेरिएबल है, व्हाट इज यूनिट ऑफ सी? इसका यूनिट क्या है?
डॉलर, ये टोटल अमाउंट है सी, ठीक है, आगे पढ़ो। Media charges if it takes in X hours to edit a manuscript. यस, सो काम करने का यूनिट क्या है, हाउ मेनी आवर्स, X hours. एक्स आवर्स। सो अब जो मेरा आपको क्वेश्चन था, आई गो बैक, वो एक्स ग्रेटर देन 2 है तो $50 तो लगेंगे ही लगेंगे, Yes. एंड नंबर ऑफ आवर्स ओवर 2 आवर्स विल बी चार्ज एट X hours. हाँ, बट व्हाट इज द रेट ऑफ चार्ज, $20. पर आवर, ओके। तो अगर ऐसा है तो कैन आई से x माइनस 2, ये एक्स्ट्रा आवर्स हैं क्योंकि 2 आवर्स का तो चार्ज लग गया, Yes, sir. ये एक्स्ट्रा आवर्स हैं, इसका क्या चार्ज लगेगा इनटू $20। और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, कैन आई से दिस इज टोटल चार्ज, Yes, sir. 2 आवर्स का चार्ज, 2 आवर्स से कितना ज्यादा, x माइनस 2 आवर्स ज्यादा, उसका Yes. क्या चार्ज, $20 पर आवर। तो टोटल क्या हो गया, C इज इक्वल टू टोटल चार्ज हो गया, C दिया हुआ है क्वेश्चन में, सो दिस इज 20x माइनस 40 प्लस 50, ओपन करो 20 के साथ ब्रैकेट, Yes. so this can be written as 20x plus 10, बोलिए, समझ में आया। Yes, sir. अब यूनिट वाइज देखते हैं, अब इसको यूनिट वाइज देखते हैं कि आंसर सही निकाला कि नहीं हम लोगों ने। ये 50 का यूनिट बताओ, इसका यूनिट क्या है 50 का, Dollar. डॉलर। व्हाट विल बी यूनिट ऑफ x माइनस 2, इसका क्या यूनिट है, Hours. आवर्स, वेरी गुड, आर लिख देता हूं मैं, आवर्स है। व्हाट इज यूनिट ऑफ 20, इसका क्या यूनिट है 20 का, Sir, dollars. नहीं, X hours. नहीं, डॉलर पर आवर, डॉलर पर आवर है ना यूनिट 20 का। तो अब अगर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आवर से आवर कैंसिल, डॉलर प्लस डॉलर क्या मिलना चाहिए, डॉलर, डॉलर प्लस डॉलर ऐड करके कभी किलोमीटर तो मिलेगा नहीं। Yes. तो मैंने आपको यूनिट वाइज समझाया कि यूनिट वाइज ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, बोलो समझ में आया। Yes. 20 का यूनिट समझ में आया, इट इज डॉलर पर आवर, Yes. ओके। सो योर इक्वेशन इज C is equal to 20x plus 10, दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, 20 आपका वेरिएबल हो गया, पर आवर हो गया। सो आंसर इज ऑप्शन बी। तुमको ये देखना है, मैं इसको फेयर करूं कि आ रहा है समझ में, Sir, आ गया sir. ओके। लेट मी नो व्हेन वी कैन गो टू नेक्स्ट वन। Yes. Sir, done. Okay, let's go to the next problem. This is about again making an equation. देखो, just playing with words. Have you read it? ये बताना मुझे, या you want to try on your own first? Yes. ठीक है, you do it first, then we'll do it together.
Sir, option C. Absolutely correct. Very good. बताओ इसमें any discussion required? No, sir. सही निकाला तुमने, सही है. So that means तुम equation form तो कर पा रहे हो. Articulation समझ के you are able to do that. Good. Now this is slightly मतलब partly similar to something we have done. Read it, take 2 minutes and then try and answer this. कुछ कुछ ये वो म्यूगल जैसा क्वेश्चन. ऊबर फेयर म्यूगल अभी किया हमने वैसा ही. Sir, option C. Which is correct. Very good. That's a good accuracy level. कोई doubt है इसमें? You want to discuss this? Have you understood? Yes, sir. You understood? हो गया ये? Yes, sir. चलो, very good. Good curve. अच्छी बात है ये. On your first day, you are doing well. Good. चलो, ये वाला जो एक question है, ठीक है, you try on your own. This is like I'll give you 2 minutes time. You want to use calculator, you're free to use, but it's not required. Let's do this one. Question number 54 from your book. Then we will do it together. आप पहले कर लो उसको. In case you are not able to make it. Sir, option A. Option A.
ठीक है, read this problem for me please. Ken and Paul each ordered a sandwich at a restaurant. The price of Ken's sandwich was X dollar, and the price of Paul's sandwich was $1, more than the price of Ken's sandwich. If Ken and Paul split the cost of the sandwiches evenly and each paid a 20% tip, which of the following expression represents the amount in dollar each of them paid? So you understood the question, right? Yes. मुझे स्पॉटलाइट क्रिएट करने दो, यहाँ पे आते हैं और अब इसको करते हैं. So they say that Paul ordered sandwich for how many dollars? Paul X plus $1. नहीं, Paul x plus 1 है और Ken x है क्या? Ken is X and Paul is X plus 1. अच्छा अच्छा, okay. Ken ordered, ठीक है, तो फिर Ken ordered for X dollars. Yes. तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ. Ken's cost of sandwich is X. So like you said, Paul's cost of sandwich will be X plus 1. Yes. X plus 1. Okay. So what will be the total cost? दोनों को ऐड कर देते हैं. Can I say total cost is 2x plus 1? Yes, sir. Right. हमको निकालना है cost per head, है ना? Yes, sir. So this is the total cost. Now Ken paid 20% tip and Paul also paid 20% tip. Yes. कैसे करें उसको? How have you done it? बोलो आपने उसको कैसे ट्रीट किया है? Question says 0.2. sorry. Sir, by adding 0.2 in each of them. 0.2. नहीं. So I'm not getting you. You'll have to help me guide and I'll write it down. Where should I add 0.2? चलो तुमने total cost नहीं निकाला. मतलब x plus क्या करना है मुझे? 0.2. 0.2. Which is equal to x plus 1. Which is equal to x plus 1. Plus 0.2. Something like this. Yes. But bete, what is unit of x? Dollar. Dollars. What is unit of 0.2? Percentage. How have you added them together? ये ऐसे add हो सकता है क्या? नहीं add हो सकता, ये तो unit ही same नहीं है. I cannot add your height to your weight, right? Yes. So how can I add dollar to percentage? ऐसे directly percent का तो ये गड़बड़ हो जाएगा. So this is not done. कुछ mistake हो गया. This step is right. चलो अब समझते हैं आप क्या कर सकते थे. What else you could have done? 20% of what? ये tip दिया है उसने 20%. $20 नहीं दिया है. 20% of what? X, sorry. Yes. आपको 20% x का निकालना है. कैसे निकालेंगे 20% of x? X into 20 by 100. तो x उसका cost plus उसका tip is x into 20 by 100. Yes, sir. Or I can say x ले लो common. Can I say this is 120 by 100? Or can I say this is 1.2 times of x? Yes. तो अगर किसी चीज को 20% से बढ़ाना है, you can directly as well write it as 1.2x. Yes. Similarly, this will be 1.2 times of x plus 1. Similar logic. Yes, sir. So the total cost will be adding these two. Yes. Right, this is total cost now. कौन सा ये बड़ा वाला square bracket और third bracket? Can I say this is total cost? Yes, sir. Each of them then paid evenly. दोनों ने evenly pay किया, तो मतलब इसको divide कर दिया equally. Yes. बस इसको solve कर लेते हैं. I'll take 1.2 common. अगर मैंने 1.2 common लिया, तो ये क्या आएगा? 1.2 into 2x plus 1. Yes, sir. Divided by 2. So this is 0.6. Yes. 0.6 को अंदर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 1.2x
plus 0.6. This is cost per head. बोलिए, देखो कौन सा ऑप्शन है ये. See for yourself. कौन सा ऑप्शन है बताओ. C. C. Answer is C and not A. Yes. है ना. अब आपको मैं वापस ये सॉल्यूशन दिखाता हूं. आप देखो आपने कहाँ मिस्टेक की है. अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई ना गर्व. Yes, sir. दैट इज की. आंसर तो आ जाएगा. अब इसको देख लो, जो समझ में नहीं आया मुझसे पूछो, अदरवाइज यू राइट व्हाटएवर यू वांट टू एंड वी विल मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. Okay. I think we have another 10 minutes or so left. तो दो एक सवाल और करेंगे and then we'll call it off. Okay, sir. Let me know. Sorry. Done, sir. चलिए, so let's see. Yes, beautiful problem. You have to express relationship between n, x and k. Units का ध्यान रखना. Take 2 minutes, please solve. क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आपको दिख रहा है? क्वेश्चन गर्व? Question is this. Option A. ऑप्शन ए इज करेक्ट. वेरी गुड. बताओ, कोई डिस्कशन करना है इसमें? समझ में आया? शैल वी डिस्कस दिस? No, sir. I don't think so. नॉट रिक्वायर्ड.
अच्छा ठीक है. If you have followed, so this is simple. If you see this, n into x gives me total number of seats in the bus. Yes, sir. And there are 3 seats empty. So that's So if you subtract that, this is total number of passengers I am carrying right now, which is equal to k. So good. Now we move on to possibly, I think, the last problem. Let me see. नहीं, ये वाला तो अभी नहीं कर सकते. ये वाला भी अभी नहीं कर सकते. ठीक है. So there are 2 more problems, but I think I'll have to keep them for your next class, where we do something on. नहीं, मैं आता हूँ तुम्हारी स्क्रीन पे. Let me replace. तो गर्व, I think आज के लिए this is enough. We may be closing in कितना early? Maybe some 5-6 minutes early close कर रहे हैं. But we will do that because next 2 problems, they are coming from understanding of linear relationship. So मुझे आपको कुछ चीजें समझानी पड़ेंगी. For example, fixed value and slope, which is gradient of a line. मैंने बोला था ना straight line बनता है. You remember हमने देखा था कि वो याद है ना तुमको एक वो ग्राफ. सर ऊपर वाला क्वेश्चन राइट, where you showed the ये वाला. मैं इसको spotlight करता हूँ. yes. So though I'm not taking this concept right now, but I told you that there's a straight line happening. Yes. Now any straight line has a slope. एक slope होता है line का, which is called gradient slope, tan theta. Yes. आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो. So next 2 problems are based on that gradient, and I would then explain you meaning and interpretation of slope and this fixed value, starting value, initial value. इसका मतलब समझेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम चैप्टर 2 भी लेंगे और ये 2 प्रॉब्लम्स भी करेंगे. Okay, but by large, I think we are done with chapter 1. A small concept that links us to chapter 2 is something that I'll start when we meet next Thursday. Coming Saturday is your English class with Professor Joseph. Joseph sir के साथ आपका English का लेक्चर होगा.